back to my channel. I'm Ritika. So today I have created this look. Okay, so now I am slightly bored kind of कि मैं डेली ऑलमोस्ट सेम लुक ही क्रिएट करती हूँ. सो मैं थोड़ा बोर हो गई. सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं. तो मैंने एक आईलाइनर सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है. सो डेट कि उसमें मैं डिफरेंट काइंड के आईलाइनर लुक क्रिएट करूँ, इनके साथ डिफरेंट लुक्स के साथ थोड़ा प्ले कर सकूँ. सो डेट्स वाई आई हैव क्रिएटेड दिस सीरीज एंड आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी. और अगर आपको ये अच्छी लग रही हो, देखते हैं कि आपको ये लुक कैसा लगता है. एंड आई गेस कि अगर इस पर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, सो आई एम नॉट गोइंग टू continue this series. I'm going to continue this series. And so stay tuned. तो चलिए start करते हैं. Okay, so first I'm going to apply this Pond's BB cream on my entire face, as this is an all-in-one BB cream which act as a fairness cream. It has SPF 30 PA++. So इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगी एंड मैं इसको बहुत थोड़ा सा अमाउंट इस तरीके से लूँगी अपनी फिंगर पे एंड अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. एंड इसको मैं अपनी आईज पे एज अ आई प्राइमर भी अप्लाई करूँगी. एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल क्रीम है. सो ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है. और मैं इसको इस तरीके से टैप टैप करके इस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी. From my Qumedia eyeshadow palette, I'm going to pick this darkest shade and apply it on all over my eyelid. इसको इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करके मैं अपनी इनर वी पे लेके जाऊंगी इन अ सर्कुलर मोशन. As you can see the difference. Now from the same palette, I'm going to pick this yellow shade and मैं इसको इस फ्लैट ब्रश की मदद से अपने eyelid पे अप्लाई करूंगी. I'm just going to clean the excess. And then with the help of my Blue Heaven eyeliner, I'm just going to draw a different kind of eyeliner because मैंने जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा ये eyeliner series है, थोड़ा different होगा. So let's see किस तरीके से turn out होता है. And then I'm just going to draw a basic eyeliner. And then from here again I'm going to draw a zigzag. ओके सो ये थोड़ा भी ऑकवर्ड लग रहा है बिकॉज अभी इस साइज पे है, इस पे नहीं है. सो हम दोनों पे भी करेंगे. And then I'm just going to again draw basic liner and then going to start draw a zigzag.
Okay, so इस साइड थोड़ा बिगड़ गया, so I'm just going to draw it again. Then I'm just going to apply this Maybelline mascara on my eyelashes. That's all. I'm not going to apply any falsies because ये eyeliner काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया है, ज़्यादा बोल्ड हो गया है, so इसलिए मैं lashes नहीं लगाऊंगी फेक. I'm just going to bronze up my face with the help of Swiss Beauty Baked Blusher and Highlighter Palette. And then I'm just going to apply blush, and in a circular motion on the ample of my cheeks I'm just going to apply blush. For this look I'm just going to go slightly over the top, so मैं थोड़ा ज़्यादा blush लगाऊंगी आज. Okay, almost done with my look. I'm just going to apply this lipstick, and the lipstick I'm using is this Lakme lip crayon. First I'm just going to outline my lips with this, and then I'm going to apply this Incolor matte lipstick in the shade nude. It is a beautiful nude shade, and क्योंकि as you can see कि आई मेकअप और फेस मेकअप इतना ज़्यादा ओवर द टॉप है, so इसलिए हम लिप्स को न्यूड ही रखेंगे. And nowadays I'm just in love with nudes, and just going to apply it. In my eyebrows with very light hand with the help of Blue Heaven eyebrow pencil. And after that I'm just going to highlight my bridge of the nose, my cupid's bow, and I'm not going to highlight the inner corner of my eyes. For this look, I hope that you like this one. I'm just hoping that eyeliner series आप लोग को पसंद आए, and अगर आपको ये लोग पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, and जल्दी मेरे अच्छे से 1000 सब्सक्राइबर्स तक मुझे पहुंचा दें, because I'm gladly I'm वेटिंग, जस्ट मैं वेट ही कर रही हूँ कि मेरे कब 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे. सो जल्दी सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना बिल्कुल मत जाना, शेयर करिए इस वीडियो को. टिल देन बाय.